Hello all. So today we'll start with the Sqoop commands. Okay, practical explanation on Sqoop commands. So we'll start with the first Sqoop command, Sqoop eval command. Okay, so Sqoop eval is basically used to create new database. Okay, we can create new table in the database. Then we can insert data in that data in the table, and then we can perform any MySQL command with the help of Sqoop eval function. Okay, so Sqoop eval basically consists of Sqoop space eval function space double dash connect. So connect function is used for all Sqoop commands, so because it's connecting your connection with the database. So connect single inverted comma open close jdbc colon mysql colon double slash localhost then slash. यहाँ पे आप database का नाम दे सकते हो, you can mention your database name, then space double dash username root and double dash password. Okay, then after that you can write query function double dash query space in single inverted comma जो भी आपको query देना है, you can mention your query over there. Okay, so make sure the MySQL username is root and password is cloudera. Okay, so let's start with create database command. Okay, so I have given my database name as a college. Okay, single inverted comma close. Okay, and then enter. Okay, so its query is executing as you can show in as you can see in the screen. So yeah, so this is the error. Okay, somewhere I missed something. Okay, let me just correct out. So the scoop eval double dash connect single inverted comma. Okay, so this is fine, single inverted comma is fine. Okay, so the error is in password. Okay, so by mistakenly I have mentioned 3 dash. Okay, so ideally it should be 2 dash. Okay, let me just correct out. This is fine. Okay, and this create, yeah, so this should be create, enter. So you can see my screen, so this command is executing. Okay, so whenever command is correct, so it will show one message at the end, eval sql tool colon something rows updated. Okay, आप यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट दे सकते हो, देख सकते हो कि इट्स स्कूप eval sql tool colon one row updated. That means our command is executed correctly. Okay, so next I want to check whether my database is created or not. So scoop space list databases space double dash connect single inverted comma jdbc colon mysql colon double slash localhost. Okay, you don't have to mention database name over here, double dash username root and then password cloudera. Okay, enter. Okay, so again there is some error. Okay, no such scoop tool. Okay, so I missed databases. It should be list dash databases. Let me just correct out. Enter. Okay, so command is executing. Okay, so these are the list of databases available in my MySQL database. You can see college database is created. Okay, yeah, at the second step. Okay, so control L will be clear your screen. Control L से screen को clear कर सकते हैं. So अभी मान लो, so like we have created database, so right now I have to create one table in the database. So again I have to run sqoop eval space double dash connect in single inverted comma jdbc colon mysql colon double slash localhost slash then your database name जिस database के अंदर table create करना है space double dash. Okay, this should be username root then double dash password cloudera. Okay, and then space double dash query. तो इस query function के अंदर we can write any query. Then let me just correct out. Yeah, so
in the query function space in single inverted comma create table your table name. Okay, then in round in there we have to mention one table name. Okay, let me just correct out. Yeah, so student is basically my table name, and in that table we have to mention column names and their data type. So id integer comma name varchar comma, so round bracket 100 means this is your length of characters for name column, and the third column is address. Let me just write it, address space varchar. Okay, okay, enter. Okay, so there is one error. Okay, so in username you don't in between double dash and username you don't have to mention any space, so this is continue command only. Okay, let me just correct out. Okay, okay, so it's showing this message is eval SQL tool 0 rows updated. So our table is created in the college database. Okay, next, so let's check whether our table is created or not. So to check list of tables we have command called list dash tables. Let me just type it, scoop space list dash tables space double dash connect, then connect space in single inverted comma jdbc colon mysql colon double slash localhost स्लैश जिस डेटाबेस के अंदर आपको लिस्ट ऑफ टेबल चेक करने हैं उस टेबल का नाम, देन स्पेस डबल डैश. Okay, college is my database name, double dash username root space double dash password is a cloudera. Okay, default password is cloudera only. Okay, so that's it. We can try to run this command. Yeah, enter. Okay, so you can see at the last row I can see student table is created. Okay, then let's take an example. I want to insert some records in the eval in the student table with the help of eval function. So again, scoop space eval space double dash connect space jdbc colon mysql colon double slash local host. यहाँ पे आएगा मेरा डेटाबेस का नाम. ओके, डबल डैश यूजर नेम रूट and then password cloudera, then double dash query इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हमारी इंसर्ट वाली क्यूरी इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नाम वॉट एवर स्टूडेंट वैल्यूज राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज. यहाँ पे आएगा आईडी कॉमा नेम कॉमा एड्रेस एंड नेम एंड एड्रेस शुड बी in double inverted comma because it's a string. So there is one error, syntax error, so I have missed single inverted comma. Let me just correct out.
Okay, make sure note of this thing. You will face these errors, like sometimes you have missed single inverted comma, sometimes you have missed some colon or slash or something. So you have to be careful for this one. Okay, let's go with this command. Yeah, single inverted comma is missing at the start JDBC. Okay, let's run this command. Okay, so again single inverted comma is missing at the end. Let me just correct out. Enter. Okay, command is executing. Okay, so at the end I am seeing one message, eval school is eval SQL tool colon one row updated. Okay, so data is inserted correctly in the student table. Let me just verify once whether our data is stored or not. Okay, let's try to insert some more records. Okay, so command is executing. So again I can see eval SQL tool one row updated. Okay, so you can do one thing if you want to check the data inserted in the table. So in the same query function you can write select star from student. Okay, सो ये क्या करेगा, आपका स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे वो सारे रिकॉर्ड्स को ये शो करेगा. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. Okay, let me just delete everything from query function. Okay, that's it. Enter. Okay, so you can see तो डेटा हमें दिख रहा है यहाँ पे. आईडी नेम एड्रेस दो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए थे, दोनों भी रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रही है. ओके, सो दैट मीन्स our data is inserted correctly in the student table. Okay, so next let's just try to import this data into HDFS. So to import the data we have command sqoop space import. Okay, space double dash driver com.mysql.jdbc.driver. ड्राइवर का डी कैपिटल. तो ये ड्राइवर क्या करेगा, ये ड्राइवर आपका माइग्रेशन डेटा माइग्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा फ्रॉम MySQL or any RDBMS to Hadoop. Then double dash connect, which is our usual command. Connect space in single inverted comma JDBC colon MySQL colon double slash localhost slash आपके डेटाबेस का नाम. Then space double dash username root password is cloudera space जिस टेबल को इंपोर्ट करना है डबल डैश टेबल स्पेस टेबल का नाम. ओके, देन
स्पेस डबल डैश m स्पेस 1। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मैपर है। नंबर ऑफ मैपर मतलब क्या, जब ये डेटा आपका माइग्रेट होगा तो एक ही मैपर एक्टिवेट होगा। ये ऐसा क्यों, क्योंकि दिस थिंग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द HDFS आर्किटेक्चर कि जब भी कोई डेटा माइग्रेट होता है तो इफ़ योर डेटा नोड इज़ 3 और ग्रेटर देन 3 तो आपका m स्पेस 3 होगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। इफ़ यू हैव ओनली वन डेटा नोड, अगर आपका ये लोकल में इंस्टॉलेशन है, लोकल में सेटअप है, तो वहाँ पे आपको m स्पेस 1 देना है, क्योंकि एक ही डेटा नोड है और एक ही डेटा नोड एक ही मैपर को एक्टिवेट करता है। इफ़ यू हैव डेटा नोड 3 और ग्रेटर देन 3 तो वहाँ पे m स्पेस 3 आएगा। नंबर ऑफ मैपर्स आर 3। ओके, सो यहाँ पे द एरर इज, okay, let me check once what is the error. Okay, table name. Okay, so scoop import is fine. Then double dash driver com dot mysql dot jdbc dot driver का डी कैपिटल में करेक्ट है। डबल डैश कनेक्ट jdbc कोलन mysql कोलन डबल स्लैश लो कोलन स्लैश, यहाँ पे स्टूडेंट के जगह पे स्टूडेंट इज माई टेबल नेम, तो दिस शुड बी डेटाबेस का नाम होना चाहिए। लेट मी जस्ट करेक्ट आउट। ओके, let me just change these things. Okay, columns to generate class writer. Okay, let me check. Okay, so yeah, database I have to change. So in the connect command you have to mention database name. Student is a table name. So when we are running when we are mentioning in the connect command or connect function, there should be our database name. Here it is. Okay, so now our import command is executing. Okay, so in this import command you can see, so it will generate one application id. Okay, so application id with the url, so you can track this job. Okay, so in that application id, application url, you can get one job id. so वो job id आप मॉनिटर करके, if my migration is with TBs ऑफ डेटा, तो वहाँ पे आपको स्टेजेस, जॉब के स्टेजेस मॉनिटर करने होते हैं। So you can see in my screen https colon double slash quick start dot cloudera colon 8020, okay, 8088 slash proxy slash application. So this is my application id, second last row in my screen, and उसके नीचे job id. Okay, so you can monitor this job from the above url. Okay, तो इसके बैकएंड में क्या होगा कि when you are running any import command in the scoop, so it will execute mapping and reducing phase. Okay, so map 0%, reduce 0%, map 100%, reduce 100% होगा तो ये जॉब कंप्लीट होगा। एट द एंड आपको जब import सक्सेसफुल होगा तो आपको मिलेगा retrieved समथिंग records, चेक फॉर लास्ट रो, रिट्रीव्ड स्पेस समथिंग, जो भी अपने रिकॉर्ड्स है जो माइग्रेट होने वाले, तो मेरे 2 रिकॉर्ड्स है तो 2 ही रिकॉर्ड्स माइग्रेट होंगे। सो रिट्रीव्ड 2 रिकॉर्ड्स। ओके, एट द एंड आपको ये मैसेज मिलेगा। सो आपको ये कंसिडर करना है कि आपके रिकॉर्ड्स करेक्टली माइग्रेट हुए हैं। ओके, एंड आवर डेटा इज करेक्टली माइग्रेटेड और नॉट, तो वो हम यूआई से चेक कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन हडूप ब्राउज़र में, हडूप पे क्लिक करने के बाद नेम नोड में जाने के बाद है यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ के अंदर ब्राउज फाइल सिस्टम, और यहाँ पे ब्राउज डायरेक्टरी के अंदर अभी जिस टेबल्स को आपने माइग्रेट किया, स्टूडेंट टेबल को, ओके, तो वो स्टूडेंट टेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, जस्ट क्लिक ऑन यूज़र। ओके,
यूजर क्लिक करने के बाद ओके, लेट मी जस्ट चेक वंस. Let me check whether our job ID is created in the UZ. Okay, let me check. That is fine. Leave. Okay, this is fine. Okay, I'm checking the child directories. Let me verify once. Okay, so you can see in the Cloudera we have जो टेबल हमारा नाम था वही टेबल के नाम डायरेक्टरी बना है क्लाउडेरा के अंदर. एंड जब मैप प्रोड्यूस सक्सेसफुली रन होता है तो पार्ट फाइल एंड सक्सेस मैसेज ये दोनों आपको आउटपुट्स मिलते हैं. पार्ट फाइल क्यों है? क्योंकि आपका डेटा माइग्रेट हो चुका है, इट्स अ टेक्स्ट फाइल. एंड सक्सेस मैसेज क्यों? क्योंकि ये सक्सेसफुली मैप प्रोड्यूस को उसने बैकएंड पे रन किया है. तो पार्ट फाइल के अंदर आपका एक्चुअल डेटा रहेगा. इफ़ यू वांट टू डाउनलोड यू कैन डाउनलोड. जस्ट क्लिक करना है आपको वहाँ पे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा. ओके, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन चेक थ्रू टर्मिनल. ओके, तो टर्मिनल में कैसे चेक करेंगे? अभी ये जो आपका पाथ है यूआई से क्लाउडेरा के अंदर स्टूडेंट है, तो HDFS DFS डैश कैट वाले कमांड से यू कैन वेरीफाई वेदर योर डेटा इज देयर और नॉट इन द पार्ट फाइल. ओके, लेट मी चेक वंस. Okay, okay, yeah, it's HDFS. Okay, so I'm just checking list of files available in the student. Okay, so you can see we have success message and we have part file available in the user cloudera student folder. Okay, let me just cat it so that कि हमें डेटा यहाँ पे मिलना चाहिए HDFS के कमांड्स थ्रू पार्ट फाइल के अंदर, तो मतलब डेटा करेक्टली माइग्रेट हुआ है. HDFS DFS डैश कैट स्पेस स्लैश आपके डायरेक्टरी का पाथ स्लैश योर फाइल नेम. तो ये कमांड से हम कैट कर सकते हैं. जो भी डेटा है HDFS के अंदर जो भी फाइल है उसका डेटा हम चेक कर सकते हैं थ्रू कैट कमांड. द पार्ट फाइल नेम इज पार्ट डैश एम डैश ट्रिपल टाइम 0. एंटर. ओके,